स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें मेरा मेकशिफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज़ होने वाला है। और आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया के बाहर से कभी कोई न्यूज़ आ सकती है, बट आ चुकी है। सो इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2025 एंड नाउ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो आज प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टोबैको, पान और उससे होती हुई गंदगी। ऑब्वियसली नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड कि इंडिया के बाहर मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा वायरल है इंटरनेट पे, क्योंकि यूके में एक एक्चुअली ग्रेटर लंदन में एक काउंसिल है, उसका नाम है ब्रेंट काउंसिल। पॉपुलेशन मात्र 3.5 लाख, पर उन लोगों को लगभग 30,000 पाउंड्स खर्च करने पड़ते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 36 lakhs इन इंडियन रुपीज़, जस्ट टू कीप द स्ट्रीट क्लीन, क्योंकि वहाँ पान मिलने लगा है और लोग हर जगह थूक दे रहे हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कौन सी नेशनैलिटी खा रही है या क्या कर रहा है, अब जो भी है गंदगी उसकी वजह से फैल रही है। तो मेरा तो सबसे पहले नेचुरल सवाल ये है कि हैज़ द वर्ल्ड नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूबर्स? ठीक है, उनका अपना एक प्रोपोगंडा होता है, वो व्यूज़ के लिए इंडिया आते हैं, बट कुछ तो बात सच होती है उन वीडियोज़ में। तुमने अगर उनकी वीडियोज़ खोल के देखी तो तुम्हें दिख जाएगा पान का दाग पड़ा है, लोग साफ़ करने में लगे हुए हैं, वो साफ़ नहीं हो रहा है, हर जगह गंद फैल रखी है। सो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी ब्रेंट काउंसिल में, लंदन में, कि तुम्हें ये चीज़ अलाउ करनी पड़ी कि यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू प्लीज़ इमिग्रेंट्स? एक ऐसी चीज़ दे दो जो जिनका कुछ लॉजिक नहीं है, बस वो हर जगह गंद फैला सकती है, तो पान उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। बट उसके बाद ये सोच रहा था तो इसके बारे में थोड़ा एक ना डीपर सवाल आया कि व्हाई, लाइक इवन इन इंडिया वो बैन क्यों नहीं है? कुछ-कुछ स्टेट्स हैं, कुछ-कुछ ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहाँ पे उन्होंने कोशिश की है, बट व्हाई एग्ज़ैक्टली? तो एक बार ये बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, तो ये टोबैको और ये पान मसाला जो तुम देख रहे हो, टोबैको की जो अभी इंडिया की जो लास्ट ऑफिशियल अवेलेबल नंबर है थ्रू रिसर्च वेबसाइट, जो पूरा मार्केट साइज है वो है 31.6 बिलियन यूएस डॉलर्स जस्ट टोबैको। एंड जो पान मसाला है उसका पूरा जो मार्केट साइज है दैट्स 51 बिलियन यूएस डॉलर्स। Funnily enough, it's also growing. So tobacco is growing at 2.2% CAGR, and pan masala is growing at twice the tobacco, which is 4.4% CAGR. I don't know who, how, why. Why is the question. But yeah, this is where we are at this point. Now, देख मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा एक डीप डाइव करते हैं कि इतना तेजी से ये ग्रो क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत हाई है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अब तो दूसरे देशों में, बट जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका और ऑल्सो अल्कोहल का इज समथिंग कॉल्ड सिन टैक्स, नॉट सिंटैक्स, सिन टैक्स। अब ये होता क्या है, ये उन चीज़ों पे लगता है जैसे टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, तुम्हारा अल्कोहल हो गया। सो बेसिकली एनीथिंग विच इज लाइक people just eat for pleasure, so that's why it's called sin tax. अब इसका कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, आई ट्राई टू सर्च अ लॉट कि भाई sin tax लास्ट ईयर का मिल जाए, लास्ट 2-3 साल पहले का मिल जाए, कोई भी एक नंबर मिल जाए इंडिकेटिव। लेकिन जो मुझे सोर्सेज मिले उसके हिसाब से sin tax every year that Indian government collects is about 2.2% of a total gross tax revenue. तो जितना आप टैक्स इंडिया कलेक्ट कर रहा है उसका 2% होता है। सो नाउ देन आई अंडरस्टूड कि ओके, इट मेक्स सो मच सेंस कि भाई दिस मार्केट, व्हाई इज इट सो बिग, व्हाई इज इट ग्रोइंग सो फास्ट? बिकॉज गवर्नमेंट इज मेकिंग वे टू मच मनी ऑन दिस। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, विल डिस्कस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सिंटैक्स से एक स्टेप हम डीप डाइव लेते हैं, उसके बाद ना अगर तुम देखोगे, तुम कहीं पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो टैक्स एलिमेंट्स हैं हमारे पास इन टोबैको एंड पान मसाला प्रोडक्ट्स पे, वो 28% तो जीएसटी है अभी करंटली, लाइक एट दिस पॉइंट। उसके बाद उस पर एक्साइज लगती है, एक एनसीडीडी नाम का एक एलिमेंट है टैक्स। उसके बाद उस पर सेस लगता है, विच अप्रोक्सीमेटली इज समवेयर अराउंड 55%। नाउ इज इट टू मच, टू लेस? जो जो ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और अल्कोहल एज वेल, वो वुड कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इस इन प्रोडक्ट्स पे, दैट सेज कि इट शुड बी 75%। सो वी आर स्टिल ऑफ, वी आर स्टिल इन नेगेटिव बाय 20% एज ऑफ नाउ। अब इमेजिन अगर ये भी और 20 होता तो कितना ज़्यादा होता। नाउ दिस इज व्हाट the government is working on right now. Like they've already introduced something, but they will be tabling it, I think, in the next parliament session. Now what are they trying to do? So to get this 20%, and also to make sure that
I'm not sure actually. Is it a move to discourage? I think it should discourage if things become more expensive. But let's see. You know what happens when you try to make something more expensive. You always end up getting new players in the market that provides something similar or the same experience at a much lower price, which eventually ends up being more harmful than the original products. And this entire cycle goes on. But let's talk about what they're trying to introduce like right now. It's a very quick summary for you to just understand the basic. If you want to understand in deep dive, मैं तुम्हें report दे दूंगा, पढ़ लेना जाके. But right now what happens, how this entire tax is calculated is it is calculated on the final or the retail sale price, also called as RSP. मान लो अगर 100 का आ गया है तो वो इसके ऊपर ऐसे टैक्स लगना शुरू होता है 2.5%, 1.8%, आई थिंक 2.3%, समथिंग लाइक दिस. ऐसे कर करके लास्ट में जो वैल्यू बनती है दैट्स 155 पॉइंट समथिंग समथिंग. बट इन द न्यू कोड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज apart like while they continue this part, I think they are also going to increase the GST, which is 28%. And apart from that, they want to tax the operations. Now when I say the ops process, they means machines used, and also different the methodology in which the entire process happens from the raw material to until the very end, that the final product that you receive basically for tobacco and pan masala. I think there are some other transparency regulation also that would be coming into the picture, and also the freedom for the government to increase this part as and when required. But this has been tabled by the finance ministry, so let's wait and see how they are trying to increase the taxation. And hopefully, I think they are also hoping, and this move is to sort of reduce the consumption. But my question still remains at the end: why not ban it completely when you know there is so much? It's such a hazard to health, to the society, to infrastructure, cleanliness. Because if you think about it, it's not just that, right? Let's say there are multiple problems that are coming out of these. Like there are people who have to spend unnecessarily, and not everybody in India is insured, so people are losing their life savings, their loved ones, because there are multiple types of cancer if you do not know. Then the civic bodies have to invest too much money in cleanliness, and then all of us gandagi and everything also acts as a breeding ground for new diseases. So again, I'm not sure why are we not completely banning it. But yeah, here we are for now. They're not banning it, of course. They are increasing the tax calculation and hoping that it becomes 2x, 3x, 4x, 5x from my side, so that people just can't buy it and give up on these habits of chewing tobacco and pan masala and also alcohol. But yeah, here we are for now. I'll see you in the next video.